this one, right? Now मैं हम dictionary dot keys. So ये एक inbuilt function है कि अगर आपको dictionary के keys, so what are the keys and what are the values itself? The name itself suggesting जहां कहीं भी fields के name है, जैसे उस attribute का name है, उस column का name है. Let's say these Jyoti, these Sachin, Vani, Suresh are column name. So I am having only one name and multiple values. One key, in this one key, I can have multiple values also. Similarly, age is my field name, field column name, but I can have values for unique candidates in my class. This is the difference between keys and values. Now you want to extract keys separately. So we have dictionary.keys inbuilt function. I want to separate values. So I'm having dictionary.values as a separate value, right? Suppose now I am adding more values here. Let's say address. I'm having address. It should be equivalent to, say, New Delhi. Now I need this code. Finding keys here. So I'm having address as a key, column value. Now अब उनकी value क्या है? So value is New Delhi. This is the difference between dictionary and tuple. So inside the tuple, you can consist dictionary also. You can consist tuple also. We have more integer numbers there, right? If you are going to print these mind tuples, and within the mind tuples, I'm going to print, let's say 4. Can you see? It's giving 0, 1, 2, 3, 4. Entire list. पूरा का पूरा list उठ के वहाँ पे आ गया. Instead of 4, if I'm giving 3, let's see what will be the value of on the screen. We have entire dictionary. पूरी dictionary की value है, right? You can deploy if loop also. Suppose if apple is present in the code. So if apple in fruits. So do we have that code? So I'm having yes. Else I will print no. Can you see? It's a printing yes, because the apple is present in my entire tuple value, right? So it's not going to change no, because that's a false, right? Now I'm going to check the functionality value of dir, and then my tuple, how many values do I have? How many functions or other values? Can you see? These class, length, multiplication, representation, and other different objects are available. Let's say you want to check the length of this tuple. You see 6. So, but यहाँ पे तो what value? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 11s are not the length of this tuple. We have 1, 2, 3, and this dictionary is 4th item. Then we have 5th item here, and then 6. This is the way we count elements inside the defined tuple. All right. If you want to check the address value, suppose I am going to check this index. Within the index, I want to check the tuple value here. It is not there. Okay, let's say 45. Can you see? It's giving 5. It's a store at the last place, so we have 5 index number there, right? If you want to delete this value, and we have but see, can you see? It's showing name error. My tuple is not defined. क्या हुआ भाई? अभी तक तो ये सारा प्रिंट हो रहा था, सारा फंक्शन चल रहा था, इंडेक्स पे भी चला इसने,
लेंथ पे भी चला, अभी मैं चलाऊंगा सब पे एरर दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? अभी तक तो सारा बढ़िया चल रहा था, क्या ऐसा हो गया इन बिटवीन? सो प्रॉब्लम ये है, वी हैड डिलीटेड दिस एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी पार्ट. So by coding itself, you can delete any tuple or any dictionary format. Is it clear? Okay. Go back to the secret easy code, easy value swapping. We are going to switch these easy value swapping here. So first we have the first value. Okay. So what we have done earlier, swapping of values of two variables, it is usually done with the temporary variables, right? So what we had done earlier, 5 a is equal to 5, b is equal to 6, and then temp is equal to a, and then we have a is equal to b, right? And b is equal to temp, right? So the coding का part है वो हमारा ये वाला है. So this is the assignment part. Here we have temporary function and then we are swapping these numbers. So allow me to print a and b both. So a comma b, let's c, but b, here I am having 5 comma 6, but once I execute this command, here I have 6 comma 5, right? So what happens in between? Here we have old values, here we have swapped values, right? So swap values just using third variable. But what happens if you are using the single command? So what will happen? A comma b is equal to a comma b. That's it. You can print these swap values using single line. A comma b is equal to, sorry, b comma a. It's a single line command in the Python. All right. Any question? Let me. So we have web browser. So with web browser dot open, with the open, I'm going to, let's say, Google. Let's see. Okay, can you see? It can open website as well. Suppose you need to open any website using your code, so you can open that website. Open the website using web browser, right? Is it correct? So we have web browser kind of module. Using this web browser, we have another method called open. Inside this open function, we have passed this URL. Let me go for another URL. Let's say I'm going to open this YouTube value. Close this one. And inside this URL, I'm going to pass another website. So now I'm going to run this code. Can you see? It's just open a new website there, right? Okay. Now the next option we have, detecting new elements, right? So okay, so you guys can see, go through this one. These next entity, these are just open website and detecting elements. So what are these? For suppose we have list 1 and list 2, so it's going to subtract this one. Set of list 1 first, typecasting will be there, and then it's going to subtract.
once you subtract list 1, list 2, it will extract new values. So 8, 11, 13 there. It's going to print that values there. This is how we are detecting new elements. So checking and analyzing the memory unit of an object. Yes, we have the size of this element. The A is using 28 memories. 28 by bits might be it might be bits, not the byte, but it's acquiring that kind of memory. Transposing any function, we have 8, 9, 10, 11, 12, 2 cross 3. 2 rows, 3 columns. So we have new matrix, jib, and the multiplication of this one. And then we have for row in this one, and then we are going to convert row to column. So now we have 3 rows and 2 columns. This is the transformation from rows to column using jib function. So this is the direct method inside the transposing. You will have to keep remember this jib function also, right? So what the jib function does, it just convert all the values in a single row, right? For row in this one, and we are getting these values, right? Okay, can I copy this value? Cut C, B. We had wrong implementation. Yes, we have this one, right? So can we print C, V, and we have matrix, and let me print old matrix also. Cut C, V. Now, so in the old matrix we have 8, 9, 10, and this one, and here we have the GIF format of this one, and then we convert it into the new format. That's the row versus column. Okay. So any question, any query here? सर बस अगर हम लास्ट के 13 को हटा दें तो क्या नल आएगा? It will give error क्योंकि वहाँ पर मिसमैच की वैल्यू आएगी. So उसने 8, 9, 10 को मिसमैच कर दिया. एरर नहीं आएगी, 10 को मिसमैच कर दिया. पूरा ही हटा देगा वो. पूरा ही हटा देगा क्योंकि ये जो फंक्शन हम पहले भी यूज कर चुके हैं. आई थिंक इसमें टॉप पर जो वैल्यू है ओपनिंग वेबसाइट इजी आउटपुट ये है. तो ये क्या कर रहा था, कॉम्बाइनिंग डिफरेंट लिस्ट, तो एक को दूसरे के साथ. तो यहाँ पे भी हमने देखा जब कभी मिसमैच था तो अगर आप डी हटा दोगे तो एच को भी वो हटा देगा, केवल ए बी सी ई एफ जी आउटपुट आएगा. तो ये जिप का प्रॉपर्टी है. आई वाज रॉन्ग कि यहाँ पे एरर आएगा, बट यहाँ पर ये वैल्यू. लेकिन अगर ये नंपाई और पैंडास अगर होता तो वहां पे एरर आता. So I had already shared these files on my GitHub account. You can go for this and you can check at the bottom part. Here we have secret Python coding tips.pdf. You can try by your own. And how to try these codes, कैसे coding codes करते हैं, I am sharing one video there. It will take very few bucks. अगर आपके पास घर पे स्मार्ट टीवी है तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हो, राइट? और अगर नहीं है तो आप सेकेंड हैंड एक अरेंजमेंट ले सकते हो. बट एवरी कोडर, हर डेवलपर्स के पास में ऐसा सेटअप होना चाहिए जो कि आपको यहाँ पे हाउ डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स राइट कोड, जो कि आपको कोड लिखने में हेल्प करता है. राइट? सो ये आप देख रहे हो सेटअप. कैन यू सी माय स्क्रीन? एक TFT मॉनिटर है, इसका कोई प्रोसेसर नहीं है. राइट हैंड साइड में जो मॉनिटर है इसका कोई प्रोसेसर नहीं है. मैंने एक लीड जो ये आप बॉटम में देख रहे हो ब्लू कलर की, इस लीड से अपने लैपटॉप को अरेंज कर रखा है, मतलब कि ऐड कर रखा है. नाउ प्रोसेसर एक है और जो सिस्टम है वो दो है, मतलब स्क्रीन अब दो हो गई और प्रोसेसर एक मेरे लैपटॉप का ही काम कर रहा है. अब इस पे जो भी कोड है, जैसे मैंने आपको एक गिटहब का कोड दिया है, तो ये कोड आप क्या करोगे? आप कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं.
लिखोगे कितना चीज लिखोगे? मान लो आप YouTube से दे रहे हो तो आप YouTube से तो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। मान लो मेरा रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हो आप, तो आप वहां पे देखते रहो और हाथ से टाइप करके इनिशियली में कोड को टाइप करो, राइट। एक और ऑप्शन इसमें आता है कि आप कोई भी फाइल, अभी आप देखना, कोई भी फाइल मैं यहां से स्वैप करके लाऊंगा और दूसरे TFT मॉनिटर पे चला जाएगा, राइट। So it will be transformation that also. So you can copy this code and you can paste it in your laptop also, right? मैंने यहाँ से कॉपी किया कोड को और उस कोड को पूरा का पूरा कॉपी करके मैंने अपने ओरिजिनल जो लैपटॉप पे जहां मुझे कोड करना था वहां जुपिटर नोटबुक पे मैं एक करके पेस्ट कर दूँ, right? New code and cut V, you can see entire code is just here. So ये पूरा का पूरा कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से कॉपी करो, कोड करो, बस आपको क्या चाहिए, एक स्मॉल लीड जो यहाँ पर ही दिख रही है वो लीड आपको चाहिए। ये लीड हार्डली 200 और 300 की आती है, ज्यादा नहीं है। आप अगर लोकल शॉप अमेजोन पे खरीदोगे तो बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन आई सजेस्ट कि आप लोकल मार्केट से, नियर बाई मार्केट से परचेज करो ताकि आपको ये 200-300 में मिल जाए, राइट। TFT मॉनिटर की जगह अगर नहीं है तो OLX पे सेकंड हैंड में मिलते हैं, और अगर नहीं है OLX पे अवेलेबल तो आप जो स्मार्ट टीवी होते हैं घर के, उनको भी आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। आजकल उनके में भी पोर्ट आता है कनेक्ट करने का, so you have that port also. All right, any question, any query? Sir, can we have a tuple inside tuple? Yes, I think so. Let me share my screen. I document that one. I hope you can see my screen. Yes. So we have 12, 45, 20, and that's a really good question. Like interview may ask this question also. Let's see. And let me print 0, 1, 2, 3. So this is printing third object, which is entirely tuple itself. So your question is really appreciable, really good. So जो tuple है वो पूरा एक object की तरह स्क्रीन पे दिखाई देगा, and yes, we can store tuple inside tuple. Yes, sir. Can we have tuple inside tuple inside tuple? Let's try. I hope it can be done. What do you think? What's your suggestion? Yes, it may have, sir. It may have, I think. Yes, it will certainly have. Can you see? Okay, so how would I track this one? 0, 1, 2. Can you see? I'm expecting the nested tuple inside nested. So I'm giving two dimension, right? Two indexing. So first square bracket is used for this entire value, and inside this I'm getting this one. Now I want T. So what I'll do, another 2. Can you see? I'm getting T here. So 3 kind of indexing I'm going to deploy. So do we have either way? No, we do not have any way. We cannot go for like this one कि sir ऐसे आप कर दो. No, I cannot go. ये तो पूरा indexing का पैटर्न ही अलग है, right? Characteristics of each values, right? So यहाँ पर जैसे टपल है तो आपने एक बार कोई डेटा टाइप को इनिशिएट कर दिया, नाउ यू डोंट वांट टू चेंज इट। जैसा कि मैंने IRCTC का चार्ट पेपर बताया था कि एक बार चार्ट प्रिपेयर हो गया, नाउ इवन TTE, गार्ड, ड्राइवर,
no one else can change this chart. तो टपल ऐसी जगह यूज होता है कि जहां पर एक बार क्रिएट हो जाए फिर आप अपेंड और रिमूव और डिलीट कुछ भी नहीं कर पाओ, उसके एलिमेंट्स पे कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर पाओ. Did I answer your question? Irrespective, we have set, list and dictionary. Set, list और dictionary में आप आइटम्स को ऐड भी कर पाओगे और डिलीट भी कर पाओगे. बट टपल इज दी ओनली डेटा टाइप. एक बार आपने मान लीजिए वेबसाइट में आपने क्रिएट कर दिया तो वो वेबसाइट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो वो 4 ही रहेंगे. आप उसे 3 भी नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते और उनकी ऑल्टरेशन भी वहां पे नहीं कर सकते. Same as the list, just immutable. List is mutable. List is not No, immutable. it's just this is the immutable list we can say. हाँ, आप कह सकते हैं. जैसे कभी कभी बहुत जगह होता है कि आपको वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, वो फीचर कांस्टेंट रखना है कि जैसे आपकी इमेज का साइज है, इमेज का साइज 250 क्रॉस 250 क्रॉस है तो आपको पूरे कंप्यूटर विजन में पूरे आपके जो वेबकैम के सामने जो भी इमेज आएगी वो 250 क्रॉस 256 में आएगी. तो आप उस केस में उसकी डायमेंशन को टपल में सेव कर सकते हो ताकि गलती से भी, क्योंकि आपका जो लाइन कंप्यूटर विजन में बनता है, डीप लर्निंग में जो कोड बनता है वो 2000 से कम का नहीं बनता है. 200 तो मिनिमम होते ही हैं, छोटे से छोटे कोड में 200 होते हैं. तो बाय मिस्टेक अगर किसी ने वहां पे चेंज कर दिया कि 256 क्रॉस 256 तो पूरा एरर ही आ जाएगा, पूरे कोड में ही एरर आ जाएगा. तो आप इमेज की साइज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फिक्स करने के लिए, ताकि आपके सारे फ्रेम्स एक ही इमेज में चलते रहें, वीडियो में भी, बिकॉज व्हाट इज वीडियो? वीडियो इज नथिंग, सीरीज ऑफ फ्रेम्स, और हर फ्रेम को आप 256 फ्रॉम 256 रखना चाहते हो तो आप टपल में स्टोर करोगे ताकि आपका वो वैल्यू आगे कोई कोड लिख रहा हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक कोड को आप नहीं लिखोगे क्योंकि दूसरा भी लिखेगा. आपके बैचमेट जैसे सोहम है, पल्लवी है, जयंती है, चित्रा, ये लोग नहीं लिखेंगे आपके कोड को. वो कंपनी में एक कोड को एक बंदा नहीं लिखता है, बहुत सारे लोग मिलके लिखते हैं. वो लोग चेंज ना कर दे इस डायमेंशन को, इसलिए हम टपल यूज करेंगे. राइट? Till the end of the code, we need constant value. No one can change that value. Did I answer your question or we have any other doubt?